This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Veda. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल एंटरप्राइज सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा को समर्पित हमारा ये विशेष कार्यक्रम हर रविवार सायंकाल 6 बजे हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। और इस कार्यक्रम की जो खासियत है वो कहने के लिए हम कहते आ रहे हैं लगातार, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से ये बात जरूर आ रही है कि इस प्रोग्राम की जो खासियत है वो ये है कि ये कंप्लीटली यानी पूर्णतः हमारा जो सनातनी ज्ञान परंपरा का जो हमारी जो परंपरा है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है, जो कि अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। इसके लिए आपको भी और हमारे सभी पैनलिस्ट को भी हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि इतने एपिसोड्स के बाद अब जाकर ये बात लोगों की तरफ से फीडबैक के रूप में आ रही है कि इस तरह का प्रोग्राम संभवतः है नहीं। लोग सोचते नहीं कि भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा का और केवल उसी हमारी ट्रेडिशन को समझने का ये जो प्रोग्राम है, ये हम लगातार सतत रूप से आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। और हमारी ज्ञान परंपरा के जो अमृत तत्व के रूप में जानी जाती है गीता उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से हम इस हमारी संपूर्ण समस्त जो वांग्मय की परंपरा है उसको समझने समझाने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए समझाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह ऋषिकेश से गीता की निष्णात अध्येता अध्यापिका और जापानीज स्टूडेंट्स को खास तौर पर गीता उपनिषद का अध्ययन अध्यापन कराने वाली आचार्य राधा जी ऋषिकेश से हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही मुंबई से हमारे साथ होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई के सीनियर एडिटर रहे हुए और एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्णी। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मशहूर वैज्ञानिक एमिनेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर बलराम सिंह जी, जो कि भारतीय मूल के हैं और इन दिनों अमेरिका में हैं। साथ ही हमारे साथ होंगे मॉडर्न मैनेजमेंट के सीनियर प्रोफेसर और गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा गुजरात के वेदव्यास सेंटर फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट के डायरेक्टर सीनियर प्रोफेसर एनएम खंडेलवाल जी। साथ ही भारतीय मूल के ही प्रख्यात प्राध्यापक एमिनेंट प्रोफेसर अमेरिका निवासी यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल जी भाटे। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं कॉर्पोरेट लीडर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक्स एचआर हेड यानी एचआर के हेड रहे हुए और गीता में विशेष हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेष रुचि रखने वाले और मैनेजमेंट के ही प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम जी दरबा हमें बेंगलुरु से ज्वाइन कर रहे हैं। हम हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट के पास चलें, इससे पहले आज के एपिसोड की एक भावभूमि हम आपके समक्ष रख रहे हैं। चैप्टर 7 का आज समापन होने जा रहा है, समिंग अप हो रहा है अध्याय 7 का। और आज जो श्लोक हैं वो कम रह गए हैं। इस अध्याय के श्लोक संख्या 27 से 30 आज इस अध्याय का समापन कर रहे हैं। श्लोकास 27 to 30 ज्ञान विज्ञान को समर्पित ये अध्याय रहा है। बहुत ही विलक्षण अध्याय गीता का माना जाता है, अध्याय 7। और यह अध्याय ज्ञान विज्ञान विषयक अध्याय आज संपूर्ण हो रहा है। इस अध्याय में हमने अब तक जो जाना है वो क्रिएशन यानी सृष्टि के बारे में, सृष्टि क्रम, उत्पत्ति, स्थिति, लय और उत्पत्ति का कारण और इसके कारक, ईश्वर की स्थिति, स्वरूप और ईश्वर कर्म के बारे में जाना है। जो लोग संसार यानी हम लोगों के बारे में, हमारे इस पृथ्वी के बारे में, हम लोग मनुष्यों के बारे में और समस्त भूत जगत जो भी आपको दिखाई देता है वो सब कुछ इसके बारे में, यानी कि इसको यूं कह सकते हैं कि उत्पन्न हुआ जो समस्त जगत है वो इसके बारे में और उसके कारणों के बारे में तरह तरह की बातें करते रहते हैं, कई तरह की थीसिस देते हैं। और आश्चर्यजनक और उलटबासी बात यह है कि जिस विज्ञान ने हमें बनाया, इस समस्त उत्पत्ति का जो काम हुआ, अब हम ही उस विज्ञान को यह कहकर खोज रहे हैं कि टोटल क्रिएशन जो है, समस्त जो उत्पत्ति है, उसका कारण विज्ञान नहीं, उसे खोजने की प्रक्रिया विज्ञान है। आप देखिए जरा, जबकि सही मायने में उसे ज्ञान कहा जाना चाहिए। विज्ञान तो हो चुका,
आज भगवान उसी अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राधा जी, प्रोफेसर खंडेलवाल जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर अनिल जी भाटे, प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम जी दरबा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दरबा साहब सुन पा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है। हरि ओम। पहला राउंड पूरा करेंगे। Yes, and like other panelists have covered the conceptual and the philosophical aspects of the chapter and the shlokas. As usual, my focus would be to relate it with the practical world. As the name of the chapter itself is suggesting that it is jnana as well as vijnana. Jnana is about knowledge, and Vijnana is about the applied knowledge or application or realization of the knowledge, or the scientific method of application of the knowledge in the normal parlance. So going by that's why it is, I think it's beautifully named, this chapter. We are coming to the end of the chapter, and in the probably second round I would like to sum up the highlights of the chapter with the keywords. But now to focus on these particular 4 verses, if we look at it, the entire human life seems to be bound by 2 things which are called the dvandva, and then the 3 things which are called the tapatraya. These are the इन चीजों के बारे में प्रस्तुत किया गया है in this particular अध्याय and towards the end of it, and rightly so. And also it is opening up to the more deeper knowledge in the Akshara Parabrahma Yoga, and then the subsequent Vibhuti and Vishwarupa Darshan Yoga. So through these 4 verses, Bhagavan has highlighted these dvandvas, and which are Icha Dvesha. He talked about Samutthena and Dvandva Mohena. This is the word that he used, and the people have already, my eminent panelists have already explained the philosophical aspect of it. The Raga Dvesha, Ishta, Icha Dvesha, and the pain and pleasure, and the cold and then the heat. Anything what we lead a life seem to have likes and dislikes, basically. You know, that which is attached, and then what we like, and then we want to attach ourselves, mostly driven by the mind and the interplay of the sensory organs for sensory pleasures, is binding us, and that is making us the adhyajna. That is making us all that, because the adhi is what happens in the mind, and vyadhi is what transforms into a bodily disease. That is what is the meaning of adhi and then vyadhi. Adhi, he is used. So dvandvas, there are we have just touched upon because of the time. I just touch upon, and throughout our Vagmaya in the literature, either through epics, Purana, Itihasa, Veda, and then Upanishad, one is of course the subtle and the profound knowledge with deep understanding, and then jnanis, and with jnana we will be able to decipher and understand. The second one is application, for the purpose of application for the common people, and which is very important. Unless we explain that, the people will not go to Gita, and then they get the best benefit out of it to apply, and then get the benefit of the Holy Gita as a way of life. And hence they seem to have given, they have given actually दृष्टांतास which are examples, उदाहरण के रूप में, छोटे छोटे कहानियों के रूप में, they have given several examples, so that it will go to the not so supposed to be the jnanis and then the scholars, but also to the common people to understand and then apply. I think my and our endeavor also is it, and this is such a beautiful program, Jignasu ki drishti se. So having said that, so this we are bound by every day from morning to night, before we sleep, we are indulging in several karmas, and then whether knowingly or unknowingly, we are also doing some punya karmas and then papa karmas, the sins. But the punya karmas, with the help of the punya karmas and with the devoted eka bhakti and then nitya yukta, you dedicate yourselves to the, and surrender yourselves to the God, and then take solace
in the God, and then he will give the sadbuddhi for you only to do some punya karmas and then negate the papa karmas. And if we keep on doing it because we don't know, because nityam sannihito mrutyuhu, the death is always next to you, and then it is definitely certain, but when is uncertain to you? You don't know, but it is certain. Jatasya hi dhruva mrutyuhu. That's what it says. And hence we should be completely prepared always. Bhagavan ka sumiran bolo, smaran bolo, dhyan bolo, whatever. So for that, if I have to take the example, because of the time I may not be able to give, but there are 2-3 beautiful examples which are given. Like one is related to, so all these kind of karmas we are doing. So there is a beautiful shloka like Atma Tvam Girija Matihi Pranaha Sakhaha Nidra Samadhi Sthiti, like that there is a shloka. And at the end of the shloka, last line says beautifully, Yadyad Karma Karomi Tat Achilam Shambho Tavaradhanam. Whatever karmas that I am doing, all that is nothing but Shambho, it is talking about Lord Shiva. Tava Aradhanam, that is only the worship, whether chalte, firte, haste, gate, sote, jagte, or even taking breath also, everything whatever I am doing, the soul is Atma Tvam Girija Mati, my mind is Parvati. So all that, there's no time, so we just touched upon it. And then another important thing, like Vithalji has already talked about, is the Prayana Kala is a beautiful word, because we don't know when the Prayana Kala, the departure comes, and hence we should be always be packed and then be ready to leave. And hence Prayana Kale, there are 2 beautiful stories which are given. One is from the Brihadaranyaka Upanishad. There is a story of where there is a example of ant, how it crosses a blade of grass, one blade of grass to the another blade of grass, how it crosses is beautifully given. If you have observed, the ants are amazing examples in our life, both in life and management, and they're very hardworking and a very intelligent species. Though it is Pipilika, it is only this much, but they have a lot of intelligence. So when it catches hold of where the destination is, from where it has to leave, and once पकड़ मिलने के बाद ही ये पीछे वाला छोड़ के इसके ऊपर पार करती है. So when God has given such kind of a buddhi to an ant, that is the example which is given. Similarly, when we vacate an old house, maybe we would have stayed there for 10 years or 5 years, 2 years. But when we were staying there, we were completely such interior decoration, वगैरह ये वो करके, we think that that is our house, whether it is rented or your own house, and then वहीं पे we are very proud of that house. But the moment, because you got a transfer on the job, you will have to vacate, or even the job itself, to relate it to the management. You work there for 10 years and somebody has given you from general manager to a vice president promotion, but अचानक क्या होता है कि ना उनको तुम्हारे ऊपर प्यार है, ना आपको इनके ऊपर प्यार है. Suddenly you are only thinking about the destination where you have to go, the new job, the new house, the new place where you have to go. That is the Prayana Kala is talking about. So even in our small day-to-day lives also, we apply it whether consciously or unconsciously. But if we get conscious that Vijnana, that is why it is important, getting conscious to realize, and then under meaning we understand and then we apply, we can take the best benefit out of even the profound philosophy, Vedanta, like Bhagavad-Gita. And the other one is another example, Prayana Kala is, they talk about Ajamila Upakshana. Ajamila is a beautiful example always given, where his son is named as Narayana so that he can keep on repeating, though he has indulged in several sinful activities throughout his life, because at the end of the day, though unconsciously he is only calling for his son, hey Narayana, 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 aajao main mar raha hu, even because of that last minute, because of Bhagavan ka naam lene ki wajah se, इनको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है. That's a beautiful example given in the 6th canto of the Bhagavata Purana, Najamilopakya. That is a positive way of doing. Another negative way of, there is always a positive reinforcement and there is a negative reinforcement, which through these examples, you will find hundreds of such stories in Upanishads and then Purana, That's why these two are very important. Directly, if you talk about a mantra or a Veda, something like that, people may not understand. So our people have done a remarkable job. Even Lord has also taken that cue from the Upanishads only, because Bhagavad Gita is nothing but a Upanishad ka Sarams and then the Brahma Vidya Yoga Shastra.
and then practical way of life. So the next example, negative reinforcement given is of the Jada Bharata. There is another fellow called Jada Bharata, though he is a Muni, he has developed an attachment, Icha Dvesha, and then he was also, so okay, he is about to die, and then he was taken, pity to the deer, which was his pet in his ashram. अरे ये डीर का क्या होगा, ये डीर का अगर मैं मर जाऊंगा तो ये डीर क्या हो जाएगा. And then because last minute अंत्यकाल है, and then प्रयाण काल, he thought about it, he gets the janma of a deer in the next janma. Whatever you think, yad bhavam tad bhavati. So whatever you keep on thinking and all, God will remember that, and then you may get into that. And because we believe in Sanatana Dharma about a Punarjanma, which is the fundamental tenet of our Sanatana Dharma, and then we have to be fearful about the sin, and then we have to be grateful to the Punya Karma, pious deeds. Right. So through these examples they have given, I think in the second round we can sum up the whole chapter, probably if I get some opportunity, and I would love to comment. Thank you. डेफिनेटली. गौ सेवा के प्रकल्प के अंतर्गत गोरस का एक उत्पाद हमारे व्यूअर्स के लिए.